So hello guys. Okay, so we have started our live stream for the first time right now. So basically we have been doing podcasts. So आप लोग कहीं पे A2Z podcast देखे होंगे बहुत सारे. So we have been sharing about it in LinkedIn, on YouTube, Twitter. So basically हम लोग अभी तीनों प्लेटफॉर्म पे लाइव है. एंड वट एवर क्वेश्चन आपके पास जो भी क्वेश्चन हो या जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो. एंड देर इज़ अ स्लाइट डिले, जस्ट लाइक 10 seconds 15 seconds of delay. So जो भी क्वेश्चन आएगा विल keep on taking those questions. And here I think we'll start off with Krish, and he will share his experience about like our token 2049. So it's like a somewhat delay. So token 2049 बहुत दिन हो गया, but we'll start with like how he experienced things in token 2049, what he understood about like क्या क्या नई चीजें हो रहे हैं, what are the new techs that are happening. And then we'll move with like a weekly summary of the top news that we have identified. And then if you want to us to discuss on some other news or something, we can do that. Just mention that in the comments below and we can talk about it. So हम लोग शुरू करते हैं क्रिश से. Thanks everyone. Starting with token 249, तो token 2049 जैसे आप बहुतों को पता है is the premier event in Asia, if not the best in the world. तो करीब करीब इस साल अराउंड 12,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे, 450 आसपास साइड इवेंट्स थे. तो ऑफ कोर्स दो फ्लोर्स इन मरीना सैंड्स पे लेके पूरा कवर्ड था इवेंट. तो 2 days is not enough to go to each and every stall, try to understand what they are doing, you know. So सबका अपना अपना comfort zone होता है. तो I am more on the centralized crypto side, institutional liquidity, custodians, payments, etc. So I tend to go to these kind of booths and talk with these kind of people to know what they are doing, what do they think that will happen moving forward, and what's their next big thing. तो इसके साथ आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हैपनिंग टॉपिक ऑफ टोकन 249 स्टेबल कॉइन्स. तो इस बार जैसे हम लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल यूएसडीसी मार्केट कैप गिर रहा है. and BUSD market cap is like almost going to be zero by next February. DAI is the number third right now. तो crypto backed stable coin से लेके fiat backed stable coin तक there's a lot of news, lot of noise around this space. तो मेरे हिसाब से स्टेबल कॉइन्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला है इस बार हर जगह, both from the payment side, banking sector, even protocols like Ripple and Stellar, they are exploring ways to partner. तो दो तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसके ऊपर मैं बोलूँगा. सबसे पहला न्यूज़ है कि एक्सरेक्स इन कोलैबोरेशन विद यूनिटास फाउंडेशन ने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, विच इज़ कॉल्ड अंडर द स्टेबल कॉइन समिट. तो यहाँ पे काफ़ी सारे जाने माने लोग आए थे डिफरेंट सेक्टर्स से. सो बेसिकली दिस स्टेबल कॉइन इज नॉट बैक्ड बाय फिएट, बट दिस स्टेबल कॉइन इज बैक्ड बाय other stable coin USDC and USDT. And the purpose of this stable coin is to just be the unit of accounting for the local currency. तो इसके साथ साथ ही और एक स्टेबल कॉइन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला है इस बार, इज कॉल्ड FDUSD, which is issued from I think Hong Kong by First Digital. तो फर्स्ट डिजिटल एक कस्टोडियन भी है, एंड दे आर आल्सो इशूइंग दिस स्टेबल कॉइन, एंड उनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है. आई थिंक ऑलमोस्ट $400 million इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. तो स्टेबल कॉइन्स लेके काफ़ी सारा नॉइज है, एंड इट वाज वेरी पल्पेबल कि जो भी इंस्टीट्यूशंस थे दे आर लुकिंग इनटू स्टेबल कॉइन्स फॉर देयर पेमेंट्स. तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मनीग्राम, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रेमिटेंस कंपनीज है ग्लोबली, दे इन कंजंक्शन विद स्टेलर दे आर कमिंग अप with their non-custodial wallets for USDC stablecoin on Stellar, जो कि रेमिटेंस के यूज केस में काफ़ी यूज होगा. इसको छोड़ के Stellar is also launching a lot of stable coins for particular countries, जैसे कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, even for Turkey and Nigeria they have some stable coins on Stellar. So I think
this topic is the right time at the right moment, क्योंकि US dollar dominance has been on the wane, so local stable coins backed by local fiat is going to be the narrative moving forward. तो इसीलिए स्टेबल कॉइन्स को लेके काफ़ी न्यूज़ में था. फॉलोइंग स्टेबल कॉइन्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन. एंड यहाँ पे मैं सिर्फ यू नो I'm not talking only about land या फिर real estate. I'm talking all sorts of real world assets. तो एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत दिनों से मैंने फॉलो किया है कॉल्ड क्यूरियो इन्वेस्ट. तो दिस क्यूरियो इन्वेस्ट प्रोजेक्ट इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड. एंड वो क्या करते हैं, दे टोकनाइज vintage cars and sports cars. Suppose you cannot buy a Bugatti Veyron because you don't have the money, but you can still buy $100 of that of that limited edition car. And वो क्या करते हैं, वो कार को अपने खुद गराज में रखते हैं एंड दे कीप इट देयर फॉर 2 3 4 5 years and they sell it at a higher price. So on an average they give you between, let's say, 14% to 18% API. And ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है विदाउट रिस्किंग a lot of capital because you are actually putting it into something which is valuable. आर्ट टोकनाइजेशन जो कि काफ़ी लोगों ने लाने का कोशिश किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट आर्ट टोकनाइजेशंस. तो इस टोटल रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि न्यूज़ में नहीं आता है उतना, बट इट हैज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट, दैट इज़ बॉन्ड टोकनाइजेशन. तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यूएस बॉन्ड्स को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं. इंस्टीट्यूशंस है जो यूएस बॉन्ड्स को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं. फॉर एग्जांपल, even you and me probably cannot get access to direct US bonds because we don't have US dollar bank accounts, and अगर बैंक अकाउंट है भी तो उस बैंक के थ्रू आई कैन नॉट बाई इट डायरेक्टली. तो क्या है कि बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल ब्लूजे फाइनेंस, उन्होंने बॉन्ड टोकनाइजेशन किया है. एंड देन देयर इज एसटीबीटी फ्रॉम मैट्रिक्सपोर्ट. तो you can buy these and you will get the yields which the US bonds are giving to you. And जो भी इसको इशू कर रहे हैं, they are going to charge you some fees. तो this bond tokenization एक चीज कर रहा है, it is artificially propping up the US dollar. क्योंकि अगर कृष यहाँ पे बोलिए. एक सवाल है. बॉन्ड टोकनाइजेशंस में एक्चुअली बॉन्ड्स जो लोग नहीं खरीद सकते हैं तो गवर्नमेंट साइड से रेगुलेशंस की वजह से ही नहीं खरीद सकते होंगे, लेकिन उसका अगर टोकनाइजेशन हो जाता है तो फिर वो लिमिटेशंस जो रेगुलेटर साइड से आ रहा है वो तो डायरेक्टली तो रिमूव नहीं हो जाता है ना, वो तो इसमें भी तो लागू होता है. करेक्ट. तो क्या है कि अगर कोई बॉन्ड्स को होल्ड कर रहा है तो यू कैन एज ए इंस्टीट्यूशन होल्ड द बॉन्ड्स, राइट. तो वो उस बॉन्ड को होल्ड करके उसके अगेंस्ट में ऑन चेन टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली बैकिंग द बॉन्ड्स 1:1. So you can buy the bonds on chain. You're not buying the actual bond. The actual bond is still with the issuer. So in this case that is STBT or Blue Jay Finance. ऐसे बहुत सारे other issuers भी है, but I remember these two names because I know these people quite closely and they are very legit people. तो बात यह है कि अगर आप डायरेक्टली बॉन्ड को खरीद के होल्ड नहीं कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली बाय अ डेरिवेटिव और यू कैन एक्चुअली बाय अ टोकन ऑफ दैट. जैसे आप गोल्ड अगर खरीदना चाहते हो तो यू कैन नॉट बाय गोल्ड एज अनलिमिटेड फैशन ऑन चेन, बट यू कैन बाय समथिंग which is issued by Tether, which is called XAU, which is equivalent to holding gold. So basically, if you want, you can buy that, and if the price of gold appreciates, you can sell it and get the price. Get the appreciation. So similarly, this is also a real world asset tokenization, I would say, but it's backed by stable coins, and you get stable yields by holding it. So And which factor decides its value? दो चीज है कि एक चीज है कि कौन इसको इशू कर रहा है. अगर मैं आप सामान तक जाके बोलेंगे ठीक है, आई एम गोइंग टू डू $1 billion वर्थ ऑफ बॉन्ड इशुएंस ऑन चेन, तो ऑफ कोर्स कोई भी इंस्टीट्यूशन आके हम लोग से नहीं खरीदेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी. बट वंस यू हैव क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, यू कैन गो एंड पार्टनर विद, लेट्स से अगर हम लोग तीनों जाके पार्टनर करते हैं अभी SBI से या स्टैंडर्ड चार्टर्ड से या कोई भी बड़े बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, एंड दे बिकम द कस्टोडियन ऑफ द बॉन्ड्स एंड वी जस्ट इशू देम ऑन चेन, then I think people will come and buy these bonds because then they know, okay,
the infrastructure is provided by these guys, but the bond is actually held in a depository or a bank which is a regulated entity. तो पैसे के मामले में जो भी गेम है दैट इज अ गेम ऑफ ट्रस्ट. लोग आपको तभी पैसा देंगे जब आपको आपका ट्रस्ट उन पे लाइक लाइक दे ट्रस्ट यू, लाइक आपका आपको ऊपर उनका ट्रस्ट है तभी, राइट. सो आई थिंक रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन is going to really be a big factor in the next bull run, along with stable coins. पर तीसरा जो है जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है वॉलेट वॉर्स. तो अगर आप क्रिप्टो में हैं काफ़ी दिन से तो आपको पता रहेगा कि लास्ट जो बुल मार्केट था इट वाज बेसिकली एक्सचेंज वॉर्स. तो डिफरेंट एक्सचेंजेस ट्राइंग टू गेट मोनोपोली बाय हुक और बाय क्रुक. आप सामने उसका मतलब you can see the devastation caused by FTX because by hook or by crook they wanted to challenge Binance. तो अभी जो है मूविंग फॉरवर्ड इट विल बी मोस्टली वॉलेट वॉर्स. तो वॉलेट वॉर्स का मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट वॉलेट इज गोइंग टू फाइट विद सम अदर वॉलेट और सम अदर वॉलेट्स इज वांटिंग यू टू यूज इट. तो वॉलेट वॉर्स का मतलब ये है कि विच वॉलेट्स विल बी द डोमिनेंट प्लेयर्स, एंड आई एम टॉकिंग बोथ ऑन द B2B साइड एंड B2C साइड और फॉर नॉर्मल यूजर्स एज वेल. तो यहाँ पे काफ़ी सारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, जैसे फायरब्लॉक्स, बिटको, कॉपर, बट काफ़ी सारे इमर्जिंग प्लेयर्स भी हैं जो कि इस गैप को फिल कर रहे हैं. दे आर कमिंग अप वेरी फास्ट, जैसे कोबो, लिमिनल. तो लिमिनल के जो फाउंडर एंड CTO है माहीन, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग टीम फॉर ज़ेडपे, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस from 2014 onwards. So he is building Liminal from scratch in Singapore. So along with it, there are also some other challenges, जैसे Saferan, Metaco got acquired by Ripple. So everybody is putting a lot of focus on wallets. क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप बैंक हो, अगर आप कोई हेज फंड हो, क्रिप्टो होल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव अ सेफ वॉलेट, सेफ कस्टडी, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड फॉर दैट इट्स बिग मनी गेम, क्योंकि एक बार अगर आप कोई वॉलेट के साथ चले जाते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि अगर आप कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाते हो एंड यू लिंक योर बैंक अकाउंट, यू जनरली डोंट वांट टू चेंज दैट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बिकॉज इट्स ईजी एंड इट्स कन्वीनियंट फॉर यू. आपका मसल मेमोरी टाइप का हो जाता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू चेंज वॉलेट्स. तो वॉलेट्स आर गोइंग टू बी वेरी पिवोटल. तो यहाँ पे वॉलेट्स को हम लोग तीन टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, जो कि कोई लाइसेंस नहीं रखते हैं एंड दे जस्ट वांट टू प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल इसमें फायरब्लॉक सबसे बड़ा नाम है. They just provide infrastructure and you can go and build a exchange, you can go and build a OTC desk, you can go and build let's say a neobank or even a license custodian. तो दूसरा जो एग्जांपल है वो है लाइसेंस कस्टोडियन का. So basically they are taking this infrastructure from somebody like Fireblocks or Bitco and they are building the custody solution and they're getting the license themselves. तो इंडिया में अभी भी ऐसा कोई लाइसेंस कस्टोडियन तो नहीं है. There are multiple reporting entities in India, like CoinDCX, आज Geotas ने भी न्यूज़ दिया है, they are becoming one of the reporting entities. On-ramp, तो काफ़ी सारे हैं, बट लाइसेंस कस्टोडियन का जो है वो अभी तक इंडिया में कोई अप्लाई नहीं किया है. एंड आई थिंक सूनर और लेटर somebody is going to get into this space. एंड दिस इज हाउ इट विल बी कि आप एक जगह जाके आप लाइसेंस कस्टडी बन गए एंड वहाँ पे जाके आप वहाँ का सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है या वहाँ का OTC डेस्क जो है, यू गो एंड वर्क विद देम एंड देन यू बिकम योर एंड देन दे बिकम योर मोड, ताकि बाहर से लोग नहीं आ पाए. बिकॉज इफ यू हैव द बिगेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ऑन योर वॉलेट, तो स्मॉलर टायर 2 टायर 3 एक्सचेंजेस या वॉलेट्स जो भी है, एक्सचेंजेस या OTC डेस्क जो भी है, they will use these wallets to get access to liquidity, easy transfer of funds, etc., etc. Because wallet to wallet transfer internally becomes very easy then. तो मेरे हिसाब से अगला bull run probably will be a head to head between wallet wars and real world asset tokenization in terms of centralized products. Of course, इसके बीच शायद स्पॉट बिटकॉइन ETF या स्पॉट इथेरियम ETF आ जाए,
then things will change a bit. But for now, I think this was a very big driving force for token 2049. और फाइनली आते हैं रेगुलेशंस पे। तो इस बार बहुत सारे रेगुलेटर्स टोकन 2049 में आए थे टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क आउट विद कस्टोडियंस, विद टेक प्लेयर्स, पेमेंट कंपनीज एटसेट्रा, जो कि इसके पहले यू कैन ओनली सी इन कॉन्फ्रेंसेस लाइक सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल। तो इफ थिंग्स गो लाइक दिस, मुझे लगता है कि वी वर जस्ट जोकिंग एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, token 2049 will become a main event and Singapore Fintech Festival will become a side event because of the hype and because of how this event is being done. So I have attended both of them. Both are very high quality, great events. But just in terms of key engagements, I think Token 2049 is much more focused on the crypto space. एंड सिंगापुर 2049 वहाँ पे रेगुलेटर्स, फिनटेक, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। सो इट्स जस्ट नॉट अ फिनटेक इवेंट एनी। तो रेगुलेशन वाइज आई थिंक बहुत सारे देश अभी अपने रेगुलेशंस लेके आएंगे। जैसे मैं ताइवान में था 10 साल, तो अभी ताइवान ने रिसेंटली अपना रेगुलेशंस लाया है अराउंड हाउ टू ऑपरेट एन एक्सचेंज, एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर। अभी रिसेंटली वारा ने भी स्टेबल कॉइन्स एंड फिएट बैक स्टेबल कॉइन्स लेके अपना रेगुलेशंस लाया है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक विल मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू क्रिप्टो कंपनीज टू कम। तो 2017, 18, 19 में इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फॉर्म अ क्रिप्टो कंपनी। आपको पता है आपको बैंक will not give you access generally, so you are building so that people can natively use your product using a wallet. But अभी क्या हो जाएगा regulations के कारण, first there is a centralized exchange and decentralized exchange. अब regulations के कारण there will be two kinds of centralized exchanges, one which follow all the laws and the other which doesn't follow any law but still exist. तो आपको समझ में आ रहा है मैं किन का नाम लेना चाहता हूँ, बट आई विल नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स हियर। तो दूसरा हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी इसी टाइप से हो जाएगा, वन वेयर यू विल हैव मैनेज्ड एक्सेस, जहाँ पे आपको केवाईसी केवाईबी करके यू कैन गेट एक्सेस टू बिगर डीपर लिक्विडिटी पूल, एंड bigger institutions will come and use this liquidity pool. So everybody will be KYC'd or KYB'd to use this liquidity pool. So I would say decentralized but managed DeFi pools. और दूसरा हो जाएगा कि pure DeFi pools where you don't have to do KYC or KYB. But अगर आप एक स्टेप बैक लेते हो तो मेटामैक्स ने भी अभी अपने डिस्क्लोजर में कहा है कि if the government asks them to report, they are going to report. So basically, the dream of having your wealth on chain and nobody can touch it, it will soon be vanishing. This place is going to get regulated like hell, much sooner than people expect. So these are the 4 topics that really interested me. And a final take. So last year, metaverse projects and NFT projects were all the craze. This year it's more around payments and real world asset tokenization. Of course there are some metaverse projects which are making some noise, but I would say ki from the hype almost 90-95% of the NFT hype is gone. So metaverse hype is also not there. तो काफी सारे projects जो कि build कर रहे थे, they have already folded up or get acquired or just closed it down. तो मूविंग फॉरवर्ड जब तक कि बुल रन नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि ये मेटावर्स एंड एनएफटीज आर गोइंग टू कम बैक. बट येस, देयर आर वेरी good projects which are still building on NFT. One of them is Believe.club, which is recently renamed to NFTFN. Disclosure, I'm an early investor in this project, so take it with a pinch of salt. So why I'm saying this project is doing something very different, वो चाहते हैं कि build some financial product using NFTs. So they are not just focusing on the speculation, या कि OpenSea या Readable या Mintable ये सब कर रहे हैं. So basically the idea is very simple. जब आप कोई NFT खरीद रहे हो, you have to hedge your downside. पर अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मार्केट में where you can do a short
to hedge your downside. So NFTFN is trying to think of something wherein you can use NFTs and you can short them with leverage, but it's like a centralized order book. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइप के फंक्शंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट द आइडिया फॉर देम इज इफ यू आर बाइंग एन एनएफटी फ्रॉम अ मार्केट प्लेस, यू कैन एक्चुअली बाय एन इंश्योरेंस ऑन द डाउन साइड, ताकि आप 5% जब नीचे आ जाए यू कैन सेल इट एंड एग्जिट, बट यू विल नॉट सफर अ लॉस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शॉर्टेड इट. तो आपको जो लॉस होगा इट विल बी लाइक मिनिमल, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीमियम. So I think these are the things, or these are the type of things which will drive the narrative based on what you can do with the NFT, or what is the utility, or what sort of things you can achieve by buying this NFT. So this is, I think, the gist of Token 2049. And any questions from the audience or anything from Sam and Sovik? So anything around gaming? Yes and no. So yes, इसलिए because there are many gaming companies which are building irrespective of market condition. There are many gaming projects which will keep building. तो गेमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको गेम खेल के मज़ा आना चाहिए. Like nobody plays a game to earn money unless you are really like in Philippines or Vietnam where gaming is kind of your profession. So I would say the biggest game that was probably successful in the last few years was Steppen. तो एक गेम के कारण सोलाना का मार्केट वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गया था. And Steppen actually incorporated, physical side to the gaming, like online gaming. So I think that is where somebody has to crack the code कि किस तरीके से you can get physical engagement, but also have some virtual aspect around it. जैसे Pokemon Go हो गया. I think a lot of people here played Pokemon Go. So you had a physical component to it. You have to walk around to catch this Pokemon, and there's also a virtual component where by using AR or augmented reality, you can see these Pokemons and capture them. तो इस टाइप का कोई गेम जो कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, will have a bigger chance of success rather than trying to hatch eggs and minting axes, or trying to buy weapons or stuff, or some kinds of gears to play the game. क्योंकि अगर आप गेम खेलते हो तो you only can play the game like 5 hours 10 hours a day, but if you have a physical component to it, you can keep doing it on a regular basis. You cannot play a game on a regular basis, but you can actually walk on a regular basis, right? तो ये जो है, I think this is very important. So of course gaming is something which will bring new users to the space, and gaming को use करके lot of adoption will happen. बट इस मोमेंट पे पीपल आई वुड से आर नॉट सो बुलिश ऑन द गेम्स, क्योंकि आई थिंक द टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर. आपको अगर गेम खेलना है ऑन चेन गेमिंग के लिए, आपको ट्रांजैक्शन स्पीड चाहिए, आपको कंसेंसस चाहिए, यू नीड बेटर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओरेकल्स, डेटा इंडेक्सर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि आप उस गेम को रियल टाइम खेल पाओ. जैसे अगर आप स्टीम में खेलते हो या गरेना में खेलते हो, सो दोज गेम्स आर मच बेटर टू प्ले एज अ एक्सपीरियंस. लाइक आपको अच्छा लगता है खेल के, बट अगर आप ब्लॉकचेन नेटिव गेम्स खेलते हो डायरेक्टली एंड दोज गेम्स आर ऑन ब्लॉकचेन, द यूजेबिलिटी एंड द एक्सपीरियंस इज नॉट दैट गुड. तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा. आई थिंक इट विल बी इन 3 to 5 years टाइम. So I think gaming will again pick up after the next bull run, because people will get funding. Animoca is actively, getting funds raised so that they can invest in this sector. So this sector will boom. But if I am to, put where my mouth is, money where my mouth is, so I will probably be looking into RWAs and bond tokenization as the next big venues, and of course wallets, because whoever is going to be the top 3 top 5 wallets, uh, they are going to control a big part of the whole crypto ecosystem. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट, because at the end of the day जो भी wallets provide कर रहे हैं, they are holding your private keys. At the end of the day you are hosting your whole infrastructure on Azure or AWS. At the end of the day you are still doing API calls.
यूजिंग वेब टू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता है, we will still be very very dependent on the web 2 infrastructure. And I think that's why, because we see so many exchanges coming up with their wallets, maybe हाँ because और ना, बिकॉज इंडिया में अगर आप देख लेते हो तो इंडिया और ग्लोबल में दो एग्जांपल है, एक है OKX और दूसरा है CoinDCX. So OKX has its own non-custodial wallet where you can trade on OKX and you can move the asset to your non-custodial wallet. So this came in because of FTX. So you can just simply keep your money in a non-custodial wallet. As soon as you want to trade, you can come to OKX and trade. For the non-custodial wallet, आपको KYC पास नहीं करना होगा, but for the trading part, you have to pass the KYC. इंडिया में सेम चीज कॉइन डीसीएक्स और ऑक्टो करने का कोशिश कर रहे हैं. तो यू कैन नॉट ट्रेड ऑन इंडियन एक्सचेंजेस बिकॉज ऑफ 1% टीडीएस. तो इसलिए ऑक्टो क्या कर रहा है, यू जस्ट बाय यूएसडीटी और यू बाय सम क्रिप्टो एंड यू मूव टू ऑक्टो ऐप एंड यू कैन ट्रेड देयर. तो गवर्नमेंट के आईज में दिस ऑक्टो ऐप इज डिसेंट्रलाइज, सो कॉइन डीसीएक्स इज नॉट liable to give them 1% TDS on any trading done there. So more and more people will find a way to use these kind of apps wherein you just use exchanges for on and off ramps. तो टेक्निकली अगर आप देखते हो तो जहाँ पे भी अलाउड है, Binance uses all the local fiat exchanges as their on and off ramps. That is how it is, and that is where जो government said they are going after Binance because they are not paying their due taxes in a certain jurisdiction. तो अगर आप इंडिया में CoinDCX को यूज करके ट्रेड कर रहे हो तो CoinDCX has to pay the TDS, CoinDCX has to pay the GST on those trading fees that they're collecting, and you have to pay the government the capital gains taxes as per the current rate. बट अगर कोई बाइनेंस में ट्रेड कर रहा है या कोई और कोई फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है, सो यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट इज लूजिंग मनी. तो अगर छोटा मोटा गवर्नमेंट है, दे डोंट हैव पावर टू एनफोर्स एनीथिंग. But then, if you are doing it with US, if you are doing it with European nations, you are doing it with Australia, you're doing it with China, Russia, India, big powers. So, at the end of the day, they are going to go after you, and this is what we are seeing in Binance. And that's where I think I will stop and let you ask any questions if you have. so I think we have not got any questions till now. So after this, we can move with the news. I think like we have the weekly updates news, and then if any questions arises, I'll just ask it here. Sure. तो जैसे मैं कह रहा था आपको, रेगुलेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे फॉर एक्सचेंजेस टू ऑपरेट. एंड जो भी आप 2016, 2017, 2018, 19 में कर सकते थे, यू कैन नॉट डू इट इन 2024, 2025. एंड इस कारण आज का जो सबसे पहला 3 न्यूज़ है, दोज आर ऑल नेगेटिव न्यूज़ एंड दोज आर ऑल न्यूज़ रिलेटेड टू एक्सचेंजेस क्विटिंग अ जुरिस्डिक्शन, क्योंकि वो वहाँ पे लोकल हायर्स करके डेटाबेसेस को लोकल क्लाउड में रख के लोकल रेगुलेशंस को मान के हर काम नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई दे आर क्विटिंग एंड दे डोंट वांट टू गेट लाइसेंस इन दोस जुरिस्डिक्शन. तो Binance is quitting Russia, Gemini is quitting Netherlands, and Bybit is quitting UK. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि bigger countries have more power, so they can force these exchanges to follow their directive, जो कि अभी हो रहा है, right? So moving forward, we will see a lot of countries coming up with their own laws and regulations, and kuch exchanges will be front runners, then there will be like second tier exchanges, and then there will be third tier exchanges. But overall, it will be kind of a closed market where liquidity is sourced internally, unless there's a way where you can offset by sending US dollar or euro or some other currency. So this is going to happen much quicker than people think, एंड उसी डायरेक्शन में इंडिया भी आगे बढ़ रहा है. या बोलिए कृष, यहाँ पे एक सवाल है. डोंट यू थिंक दैट exchanges like Binance or bigger exchanges are losing customers, especially in those countries? देखिए, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, लाइक ऑनेस्टली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाइबिट विल से नहीं एक के बाद एक लगातार ये एग्जिट हो रहा है एक कंट्री, तो फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम
बाय देखिए, अगर ये अभी एग्जिट नहीं करते हैं, दे विल हैव अदर प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अगर बाइबिट बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट आउट ऑफ यूके, व्हाट कैन द यूके रेगुलेटर डू? तो यूके रेगुलेटर सिंपली जाके बोलेगा कि ऐप स्टोर को कि डू नॉट शो बाइबिट ऐप इन यूके ऐप स्टोर, राइट? तो iOS और एंड्रॉयड उस लेवल पे अपना पॉलिसी फॉलो करेगा जहाँ पे इफ यू डोंट हैव अ लोकल लाइसेंस यू कैन नॉट ऑपरेट। नो एंड बट ये तो इससे तो आसान है ना कि कॉम्प्लायंस ही फॉलो करो। नहीं, इसका कंप्लायंसेस फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यू हैव टू हैव लोकल पीपल देयर, यू हैव टू हैव लोकल कंप्लायंस ऑफिसर, लोकल सीईओ, लोकल सेग्रीगेशन ऑफ वॉलेट। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ यूजर्स नहीं है उस एरिया में, आपको ग्रो करने के लिए या उस रीजन में आपको ग्रो करने के लिए यू हैव टू बर्न मनी इन द बिगिनिंग। और अभी एक्सचेंजेस वैसे भी ज़्यादा पैसा नहीं बना रहे हैं। So it doesn't make sense for them to burn money with the hope that they will be regulated someday, or they will break even, or they will make profit. So easily, I think most of these exchanges are quitting some markets, and US is after Russia because of the Russia-Ukraine war. So one of the other reasons could be that Binance is definitely quitting Russia because of some other pressures, not just market condition. हाँ। तो जैसे मैं कह रहा था कि रेगुलेशंस के कारण लिक्विडिटी विल बी फ्रैगमेंटेड टू लोकल regions unless you are using, let's say, decentralized exchanges, or exchanges which are not operating by the law. So geotas is one such exchange which is operating by the law, and they are now part of the reporting entity. तो a lot of Indian companies are part of the reporting entity. तो ये reporting entity ये है कि basically they are responsible for reporting any kind of suspicious activity, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है। सो दे आर नाउ मोर लाइक NBFCs और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल institutes. So this I think is the future for most of the countries. अब कुछ कुछ कंट्रीज है जो कि अपना रेगुलेशंस तो लाएंगे पर दे कैन नॉट एनफोर्स, तो दिस विल बी मोस्टली the 150 countries which probably has no say in the world politics at all. So a lot of countries will actually enforce their laws, and a lot of others will have the laws, but they will not have the will or the resources to enforce them. So this is going to happen sooner rather than later. पर जैसे मैंने कहा कि बड़े कंट्रीज में रेगुलेशंस आएंगे एंड रेगुलेशंस को फोर्स भी किए जाएंगे, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस जेमिनाई वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। एंड नॉट जस्ट जेमिनाई, आपको अगर याद है तो कुछ दिन पहले OKX ने भी कहा था कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया राइट नाउ इज, पहले तो उनका एक लोकल कॉस्ट सेंटर बन जाएगा कि दे आर रनिंग ऑपरेशंस फ्रॉम इंडिया, सो दे आर हायरिंग कॉस्ट को स्टाफ। दूसरा होगा कि अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे विल नो हाउ टू वर्क इन द लोकल इंडियन एनवायरनमेंट, बिकॉज इंडियन एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो तीसरा होगा कि इफ दे थिंक इट सुटेबल, दे विल देन अप्लाई फॉर लाइसेंसेज व्हेन द लाइसेंसेज रेजिम कम्स इन, एंड अगर वो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड फॉलोइंग द लॉ, देन उनको लाइसेंसेस मिलना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड सो Gemini, being a foreign exchange and having a holding company or subsidiary in India, will actually be able to go toe on toe with all the Indian exchanges. And that is the idea कि बाहर के कुछ exchanges आके इंडिया में अभी बेस सेट करना चाहते हैं, because they think that since the government is getting taxes, they are going to regulate this space maybe in 1 or 2 years time, which is still a possibility. और उसके बाद उनको लाइसेंसेस मिल जाएंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू बिल्ड अ मोट अराउंड देयर होल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट दे वांट टू गिव। बट मेरे हिसाब से दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 years, प्रॉब्ली 2 साल बाद, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस है, और उसके बाद आई थिंक इलेक्शंस के बाद जो ईयर होता है वो गवर्नमेंट विल फोकस, विच एवर गवर्नमेंट इज विनिंग, दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन trying to fulfill some of their commitments. And during this time, I think the bull run will also come. So government will want to see how it plays out before actually imposing new laws. तो 2 साल मिनिमम चाहिए होगा गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए। सेम एक्सपीरियंस मेरा ताइवान में भी है। तो 2018-19 आई थिंक द गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग कि किस तरीके से
रूल्स एनफोर्स किया जाए, एक्सचेंजेस ऑपरेट करें उस रूल्स के अंडर में, हु इज़ द रेगुलेटिंग बॉडी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अभी जाके ताइवान में कुछ रेगुलेटर्स बोले हैं कि ठीक है, दिस इज द रेगुलेटिंग बॉडी फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दिस इज द रेगुलेटिंग बॉडी फॉर कस्टडी, दिस इज द स्ट्रक्चर यू शुड फॉलो टू रन एन एक्सचेंज। तो इंडिया में भी वो काफ़ी मतलब 2-3 साल के बाद ही आने वाला है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, शोभिक और सैम? Oh, I was just thinking, at one side, Gemini is exiting Netherlands in November. On another side, it's entering India. हाँ, तो आप देख लो ना, It's a अगर good thing आपको for us. नहीं, अगर आप देखो ना कि अगर आपको एक कंट्री में एक्सपैंड करना है, आप कहाँ पे एक्सपैंड करोगे? जहाँ पे उसका पॉपुलेशन बूम हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। जहाँ पे मार्केट अगर साइज बढ़ा है, यहाँ पे मार्केट साइज बड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम। time. तो इंडिया का टैम इतना बड़ा है कि इवन इफ दे पुट द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट दे वर अबाउट टू पुट इन नेदरलैंड्स एंड दे स्टार्ट पुटिंग इट इन इंडिया, दे विल बी हैविंग अ फुटप्रिंट मच बिगर देन दे वुड हैव इट इन नेदरलैंड्स। और नेदरलैंड्स का पॉपुलेशन इंडिया के हिसाब से तो काफी छोटा है। यस, पर कैपिटा जीडीपी इज हायर, so chances of people putting in large amount of money is higher, but India is a growing economy, right? तो अगर यहाँ पे आके जेमिनाई वही पैसा इन्वेस्ट करता है, so it's probably having a bigger TAM. Then if this goes to somebody somewhere like, let's say, Netherlands or France or Germany or UK, so it makes sense for exchanges to come to India because here it's still not regulated. And अगर कोई exchange आके गवर्नमेंट के पॉलिसीज को फॉलो करके एंड दे प्ले बाय द रूल्स, chances are they will get the license that they want to get. तो चलिए, इसके साथ अभी तक तो कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। वी पास द बैटन टू शोविक फॉर हिज एनालिसिस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। थैंक यू क्रिस, आपने हम लोग को इतना सारा नॉलेज दिया और मार्केट्स के बारे में बताया, जो जो चीज़ हो रहा है और एक्सचेंजेस वगैरह ये सब थिंग्स। बट पैसा कमाना तो आप ही बताते हो। what to buy, what to sell. एक्चुअली सब कुछ जान के रखना होता है ना। सिर्फ आके मार्केट में घुस के इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सब चीज़ जो है ना, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि मीन है। मतलब आप सोच भी रहे हो तो छोटा सोच रहे हो। अगर आप एक ब्रॉडर व्यू लोगे या फिर टॉप व्यू लोगे पूरा एक इंडस्ट्री का, तो फिर आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो फैक्टर्स को अगर आप लोग समझ लेते हो तो फिर आप लोगों को डिसीजन लेने में काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी मतलब आसान तरीके से आप लोग डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि इस वीक में प्राइस मूवमेंट क्या है। ये BTC USDT का चार्ट है, हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो फिर ये बेसिकली 4 आवर का कैंडल वगैरह ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 25,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और उसको ब्रेक करके जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक नीचे शॉर्ट नहीं होना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उस जोन के आसपास ही 25,420 या फिर 400 आप लोग मान सकते हो कि ये जोन के आसपास से BTC बाउंस बैक किया है। और अभी जो प्राइस है वो लगभग है आपका 27,000। हाँ, यहाँ पे और एक न्यूज़ है, शायद क्रिश आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। माइक्रो स्ट्रेटेजी का, यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी ने और पोजीशंस लिया है बिटकॉइन में 27,000 लेवल के आसपास। तो आप लोग ये जो लेवल है ना, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है ये पोजीशंस बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो आप लोग भी उसको फॉलो करते रहो और अकॉर्डिंगली आप लोग को मतलब जैसा रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लो। अभी आप लोग को क्या करना होगा, जब तक देखिए ये जो चैनल हम लोग ने पहले बनाया था, ये चैनल के अंदर जब तक नहीं जाता है तब तक तो आप लोगों को बुलिश नहीं होना है ट्रेडर लोगों के लिए। और शॉर्ट साइड में भी वही है, 25,000 जब तक ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है तब तक आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट नहीं लेना है। तो फिर आप लोग इसके बीच में कर सकते हो ग्रिड ट्रेडिंग। ठीक है, तो ग्रिड ट्रेडिंग का डिटेल्स जो है वो आप लोग हम लोग का A2Z Crypto जो वेबसाइट है वहाँ पे एक लिंक है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो और XRX पैनल या फिर ऐप में जाके आप लोग ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये रेंज बाउंड मार्केट में स्पेशली। ठीक है, तो BTC का तो फिलहाल यही है।
इथेरियम का भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इथेरियम यहाँ पे 4 आवर का अगर आप लोग टाइम फ्रेम फॉलो करें तो फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जोन में ये काफी दिन तक घूमता रहा। उसके बाद ये आप लोग अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचोगे इस तरह से, मैं दिखा देता हूँ इस तरह से, तो आप लोग देखो कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जर्नी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहो, और जब तक ये, मैं एक लेवल आप लोगों को बता देता हूँ, जब तक ये 1600 के नीचे नहीं आता है तब तक तो ठीक है। 1600 के नीचे अगर आता है तो मतलब ये फिर से आप लोग मान सकते हो कि इस लेवल के आसपास आके आना चाहिए इसको, 1570 या फिर 1550 ये रेंज के पास। तो फिर 50 पॉइंट का जो है वो आप लोग ट्रेडिंग पोजिशन वहाँ पे बना सकते हो। और एक पॉइंट आप लोग मार्क करते हो, ये दो जो ईएमए है, ये दो ईएमए का क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्रॉस ओवर जब होता है तब एक अपसाइड मूवमेंट का चांसेस रहता है। और आज हम लोग जब शूट कर रहे हैं 29, तो यहाँ पे आगे आप लोग को देखना है कि ऑप्शंस का एक्सपायरी भी कैसे होता है इस मंथ का, और उसमें रोल ओवर नेक्स्ट मंथ के लिए क्या क्या पोजीशंस जा रहा है और किस क्वांटिटी में जा रहा है। तो वो भी जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर्स में करते हो तो वो थोड़ा बहुत आप लोग उसको देख लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं मंथली रिटर्न। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर वाइज अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो अभी चल रहा है सितंबर 29। अक्टूबर में देखिए 2013 से लेके पहले 60%, फिर नेगेटिव में रिटर्न दिया, फिर पॉजिटिव में, तो इस तरह से रिटर्न है। तो इसका अगर आप लोग लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करो, 2022 में 5.56% रिटर्न आया था। तो आप लोग अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी जाओ तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन आप लोग को इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम से आप लोग खरीद के बैठ जाओ और बिल्कुल मतलब ऑल इन हो जाओ। ठीक है, ये नहीं करना है आप लोगों को। तो आप लोग को देखना है, सबसे पहला बात है, देखो ये अक्टूबर मंथ जो है ये एक फेस्टिव सीजन है, तो डेफिनेटली इंडिया में जो है ना लिक्विडिटी काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर से। तो लिक्विडिटी जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन का चांस ज़्यादा होता है। सेम चीज़ है दिसंबर में। दिसंबर में क्रिसमस और न्यू ईयर ये सब फेस्टिव सीजन रहता है उधर। तो वहाँ पे भी लिक्विडिटी जो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आप लोग देखोगे कि जब जब दिसंबर में फॉल आया है 34%, 15% इस तरह का फॉल आया है। कुछ कुछ ईयर में आप लोग देखोगे जो 2020 में, 2017 में यहाँ पे थोड़ा बहुत राइज हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मान के चलो कि फेस्टिव सीजन में भी लिक्विडिटी बहुत कम रहता है। सेम अक्टूबर में जैसे इंडिया में रहेगा, दिसंबर में ग्लोबली रहेगा। तो फिर लिक्विडिटी जहाँ पे कम है वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा संभाल के वहाँ पे डिसीजन लेना होगा। और एक प्राइस एक्शन में दिखाई देता है, ये सोलाना का प्राइस एक्शन है बेसिकली। सोलाना एक ईयरिस पैटर्न एक्चुअली जो बना हुआ था सोलाना का प्राइस एक्शन में, तो वो उसको ब्रेक करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये बेस लाइन है, बेसिकली ये बेस लाइन से बार बार बाउंस कर रहा है यहाँ पे आके। और ऊपर से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर बनाते हैं तो यहाँ पे इसको तोड़ के फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ हल्का सा मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है ना वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना हुआ है। तो उसका जब शोल्डर को जब तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तब ये बड़ा सा प्राइस मूवमेंट दे सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ये रेंज बाउंड होने का चांसेस है। तो आप लोग ये जो शोल्डर लाइन है ना ये 25, 25 नहीं, आप लोग यार 20 पॉइंट आप मान सकते हो कि 20.3। ठीक है, ट्रेडिंग पोजिशंस के लिए वो वाला लेवल आप लोग मार्क करके रखो, ये 4 आवर टाइम पे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। व्हाट डू I यू think विश? Shavik, the increase in Solana may be due to some events like Solana Hacker House जो अभी बैंगलोर और मुंबई में हुआ था। हाँ, वो छोटा छोटा प्राइस मूवमेंट है ना, ये तो ट्रेडर लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मेजर प्राइस मूवमेंट आने के लिए उसमें कोई एक, जैसे क्रिश बता रहे थे कि कोई एक मान लो कि अच्छा सा ऐप अगर लॉन्च हो जाए या फिर कोई एक एप्लीकेशन जो है उस इकोसिस्टम में आ जाए जिसका यूजर बेस काफ़ी अच्छा हो, तो उस तरह का कुछ होने से ये एक फैक्टर होना चाहिए। नहीं तो फिर वही है कि 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट मूव करके फिर से वही कहानी, बस उसी जगह पे आके रेंज बाउंड हो जाओ। तो वही है। और ट्रेडर लोगों के लिए ये है कि हाइप जब
क्रिएट होता है ना, कोई एक न्यूज़ के बेसिस पे या फिर कोई एक इवेंट हो रहा है, आने वाला है, जैसे कि मान लो कि कोई एक क्रोनोस, शायद मैं अगर सही हूँ तो क्रोनोस का जो है वो 19th को एड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ है, तो वो उसको थोड़ा सा आप लोग मॉनिटर करके रखो। आप लोगों को लगभग आप देखोगे कि 15 डेज पहले से ही उसमें हलचल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में किसी का टारगेट है कि थोड़ा सा पैसा बनाया जाए, थोड़ा सा कम कैपिटल लगा के और रिस्क ज़्यादा लेके, तो फिर इस तरह का इवेंट में ट्राई किया ही जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं आज के कुछ आखिरी न्यूज़ पे। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी एक्वायर्स 5,500 बिटकॉइंस। तो इसके साथ ही आई थिंक माइक्रो स्ट्रैटेजी हैज मोर देन 130K बिटकॉइंस एंड माइकल सेलर हैज मोर देन आई थिंक 15K बिटकॉइंस, so overall they have over 150,000 bitcoins, which is quite a lot. तो अगर आपको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस कमिंग इन मार्केट इज गोइंग टू पम्प बिकॉज ऑफ द होल्ड बिटकॉइंस ओनली, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि most of the hedge funds, most of the people are not as bullish like MicroStrategy. तो इसीलिए ईटीएफ्स जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उनका स्पॉट ईटीएफ्स अप्रूव होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन all the institutions can come and just buy the ETFs. So they don't have to worry about the underlying layer. The underlying layer can be held by a custodian, a licensed custodian or a repository, or even an exchange where they are holding this underlying asset. तो उस टाइप पे क्या होगा कि एक ही बिटकॉइन को या तो कोई इंस्टीट्यूशन खरीद के बैठा है, then they can use it to do derivatives, then it can take a loan against it and put it again back in the market. So it becomes a different kind of game when institutions coming with a lot of money. तो I was just trying to say that. तो इसीलिए लाइक जब आप सुनते हो कि स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए अप्रूव नहीं होता है बिकॉज इवन द गवर्नमेंट्स नो दैट अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, मनी विल गो आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड कम टू द क्रिप्टो मार्केट यूजिंग दिस ईटीएफ्स। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जितना देरी हो सके उतना डिले करें, but it's an eventuality that is going to happen because already futures ETF are getting uh, approvals in various countries, even in Australia, US, etc. तो स्पॉट ईटीएफ के मामले में जब हम आते हैं तो यूएस एसईसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दे डोंट वांट, स्पेशली गैरी गेंसलर जो एसईसी चेयर है, ही डजंट वांट टू अप्रूव इट प्रोबेबली ड्यूरिंग हिज होल टेन्योर। तो उन्होंने जितना हो सके उतना खींचा है, एंड ही डजंट वांट टू गेट इट डन बिफोर जनवरी। तो ये उनको भी पता है कि अगर ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो देयर विल बी अ बिग मार्केट जंप एंड पम्प, एंड अगर वो जनवरी के टाइम पे आता है या उसके बाद आता है, सो इट विल बी लाइक अ कंटिन्यूअस पम्प फॉर द क्रिप्टो स्पेस, क्योंकि अप्रैल में बिटकॉइन हाफिंग है। So the bull market will actually begin much earlier अगर spot ETF approve हो जाता है, because then institutional money will come in and these institutions will try to earn as much as possible, as quickly as possible, and at the expense of retail investors. तो अगर आप retail investor हो हमारे तरह, the best strategy is to acquire and hold on to it till the market really pumps. And investment Chris, is something which everybody should learn, and crypto investing is something which every youngster should learn. हाँ, sorry, बोलिए। क्रिस, यहाँ पे सीपीआई डेटा जो आया है इस वीक में यूएस का, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे होंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने रेट हाइक भी नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है इसका इम्प्लीकेशन क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ऑपोजिशंस जो है वो लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं इसको लेके कि आ, आप लोग रेट हाइक नहीं कर रहे हो, यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, तो फिर आगे जाके तो ये सिचुएशन और ख़राब हो रहा है। तो तो आपको देखिए क्या लगता है कि सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट में इसका इफेक्ट क्या होगा? सिचुएशन तो ऑलरेडी 2020 में खराब हो चुका है, जब उन्होंने 20% ऑफ द टोटल यूएसडी लिक्विडिटी को एक ही साल में प्रिंट कर दिया था, तो उसका इफेक्ट तो होना ही है। So currently, US government is trying its best not to do rate hikes. इसका इफेक्ट क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज क्रिप्टो इज लाइक स्टॉक्स ऑन स्टेरॉइड्स।
तो अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा गिरता है, स्टॉक मार्केट उठता है तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा उठता है. So basically it's one of the most volatile assets. So people, when they invest, when they have excess money, they invest in crypto. When they have less money, they will not invest in crypto, they will keep it in bonds, they will keep it in, you know, सेविंग्स, राइट. तो इसीलिए अभी का जो सिचुएशन है, पीपल वुड कीप देयर मनी इन बॉन्ड्स एंड बॉन्ड टोकनाइजेशन के थ्रू लॉट ऑफ स्टेबल्स आर गोइंग इनटू दीज बॉन्ड tokenized bonds, and US dollar is actually getting stronger, if you see, compared to other currencies because of these factors, because artificially people are buying bonds on chain, people are buying bonds and holding it and propping the US dollar. But ऐसा नहीं है, because if you see also from previous data कि before US bonds were very lucrative and people used to buy and hold it, but ऐसा अभी नहीं है कि all the countries are buying US bonds. So US cannot keep on increasing its debt uh, unnaturally. ये 2008-9 का सिनेरियो रिपीट नहीं हो रहा है जब हर कोई बॉन्ड खरीदने के पीछे भाग रहा था. Those were different kinds of bonds, but anyways, I'm not going into that. But these are government bonds. Those were debt bonds, so those were something else. So, of course, there's a artificial, pumping up the market so that recession doesn't hit immediately. So everywhere, if you see the data, recession should have happened by now, but the Yes. government has actually, stretched it somehow so that recession doesn't hit, because it's in their best interest for now. But sooner or later, जब पैसा प्रिंट हुआ है तो इन्फ्लेशन बढ़ना है, like as simple as that. So you cannot control that, and in order for you to control that, you have to hike rates. And अगर आप rate hike करते हो तो it will affect your economy, so your economy is going to shrink. और ऐसा नहीं है यूएस डॉलर इज द डोमिनेंट फैक्टर और de facto like 10-15 years back. Now US dollar is losing its, uh, dominance as well. So anyways, who lets the dogs out? I don't know. पीछे से कुत्ते के भौंकने का आवाज आ रहा है. So चलते हैं लास्ट न्यूज पे, विच इज बेसिकली एयर ड्रॉप न्यूज. तो सिलेस्टिया जो कि एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, इट्स गोइंग टू डू इट्स एयर ड्रॉप. करीब करीब 7579 डेवलपर्स और ओवर 570,000, तो रफली समझ लीजिए 585,000 ऑन चेन एड्रेसेस आर एलिजिबल फॉर दिस एयर ड्रॉप. अब इसके बाद Celestia is going to do some analytics using Nansen or Dunes and somebody else to see which are the addresses which really has done something, and which are the addresses which are just trying to do token farming. So I think this number will probably come down to, let's say, 50% or 60% of the actual number of token airdrops, and you can go and check the eligibility there. With this, we come to an end to our first live session. Hope it went well. Yeah, over to you, Sam. Yeah. So I think we have covered all the things that for the week, and we have not got any questions unfortunately for today. But looking forward to it. Like आप लोग questions पूछिए, because हम लोग ये podcast to live sessions shift का वजह ये है कि so that people can interact with us and ask questions regarding the markets कि क्या हो रहा है from a macro perspective, like Shavik was saying. So let's end this live session. Like it's almost an hour since we started, and yeah, let's end this, and let's keep on stacking bitcoins like MicroStrategy is doing, so that we also have a very healthy portfolio once the bull market starts, whenever it starts. And yeah, hoping to see you again in the next live session that we'll be doing next week. So thank you guys everyone. for watching. Yeah, Thank you. bye bye, see you Bye soon. bye.